the board examination. Okay. For that, there is only one last topic that I could not explain because of internet connection. I will explain that to Rishita, and then we will move on to the next, that is the reactions of nucleophilic substitution of haloalkane. Okay. So, Rishita, you remember we were at this position in the last lecture? We discussed till here. Yes. Yes, sir. So here we are having carbocation that is having a positive charge, and we have water molecules. Obviously, I have drawn 4, but there will be multiple water molecules that will be surrounding the carbocation. Now the oxygen, it is having a delta positive charge on the water molecule. This oxygen atom, it is going to interact. It is having negative charge. That is why it is going to interact with the positive charge on carbocation. And obviously, positive and negative, it will give you some kind of attraction. And attraction is always what it is related with the decrease in energy or increase in stability. Because of this stabilization that is provided by the solvent molecule, the carbocation is stable in polar protection. Okay, so this is now what stabilized due to interaction with solvent molecules. Okay, solvent molecules में, I mean, instead of solvent, specifically this is water, but in general, if you have any polar protic solvent, that is going to stabilize the carbocation. Now it makes sense, yes or no, please tell me? Yes, sir. ये बताइए. Yes, you don't need to, if you want to draw this, you can draw it. Okay. None, sir. Now, Harsha, you can also write the topic. SN reactions of haloalkanes. Okay, SN reactions of haloalkane. थोड़ा बस आप लोग देख लीजिए यहाँ पे and don't write now. ठीक है, अभी रुक जाइए, don't write now. Yeah, your voice is a bit low. How about now? Is it fine? Is it low for you also, Rishita? No, sir. Harsha, how is it now? Any better? Yes, it's fine. It's fine. Yes.
there are a few reactions that we have to see. When you have Rx, and if you react Rx with aqueous, this is important, aqueous NaOH or aqueous KOH, sodium hydroxide or potassium hydroxide, then what is going to happen? Here you can see Na is positive, OH is negative. So what will happen? OH negative is going to attack on the alkyl group and you are going to get alcohol, ROH. Similarly, if you have water also, then in that case also you are going to get ROH. The H2O molecule will attack and then the halogen atom will take one of the hydrogens from water molecule and it will leave the OH with the alkyl. Similarly, if you have something like this, let us suppose you have NH3. The reaction of NH3 will be similar to that of H2O. Halogen atom will take one of the hydrogen and NH2 will be attached to the alkyl group, so you will get amine. Now, if you have something like this, let us suppose you have R dash, C triple bond C, and it has a negative charge. And here you have Na, sodium positive. So whatever is having the negative charge, that will attach with, that is the nucleophile. You have to identify the nucleophile, and that will be attached on the alkyl group. So you will have R that is attached with the carbon atom that is having negative charge. After this, we have triple bond. Then we have again a carbon atom, and then we have some R dash. Similarly, if you have R dash, COO negative, Ag positive, sometimes you will see only COOAg. They will not show negative and positive, but you should understand that Ag is a metal. Metal has tendency to lose electrons. It will have a positive charge. COO negative will be there, so you will get R. This R will be attached with the oxygen atom. Rather, I can do it like this. I mean, this oxygen atom will attack on the R. No? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं R dash COO, instead of Ag you will have R. After that, if you have, let us suppose, lithium aluminium hydride. So you can hear from the word, this compound is what? Lithium aluminium hydride. Lithium is metal, aluminium is also metal. All of these will be losing electron. So hydrogen will gain electron. Hydrogen ke paas electron zyada. So hydrogen is having negative charge. So that is going to attack and you will get alkene R and you will get H here. So if R was CH3, now it is CH4. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. समझ में आ रही बातें? Yes or no? Rishita and Harsha? Yes. Okay. Similarly, now you have some important ones. For example, if you have, let's suppose, KCN. In KCN, you are going to get RCN. If you have AgCN, then you will be getting, in this case, RNC, isonitrite. Similarly, if you have KNO2, you will be getting RONO. I need to make one more. You have AgNO2. You will get RNO2. ठीक है, so these are the reactions. बस यहाँ पे आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? You have to identify the nucleophilic part. ठीक है, और उसके बाद फिर आपको you will have to identify that leaving group हटाना है, nucleophile को ऐड करना है. ठीक है, please write this down, then we will do some questions. Raise your hand, student.
So RCN and RNC don't mean the same thing. No. RCN will be having carbon-carbon bond, and RNC you will be having carbon and nitrogen bond. Okay, sir. This is still, if I want me to write the name, this is also alcohol. This is amine. Now this is alkyne. I mean, you don't. This is ester. This is alkene. This is nitrile, or you can say it is cyanide. Alkyl cyanide. Okay, nitrile or alkyl nitrile, alkyl cyanide. This is isonitrile or isocyanide. Isonitrile. This is nitrito. This is nit. Nitrito तो it's nitrite coordination में nitrito होगा. नाइट्रोएल्केन, अल्काइल नाइट्राइट, आइसोनाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल अल्काइल नाइट्राइल एक ही चीज है, ठीक है ना. बुक्स में जनरली आपको अल्काइल के साथ लिखा रहेगा वो. Let me know once you're done. Just waiting for Rishita now. The right question. Write the products or following. Okay, number one. For example, you have bromoethane and you react this with aqueous KOH. So what will happen? Please listen to this very carefully and then you will do, okay? Draw the molecule as it is apart from the halogen atom. What did I say, Rishita and Harsha? What did I say? Molecule is without the halogen atom. Without the halogen atom. Okay. Drawn. Now, wherever the halogen atom was there, you look at the nucleophile. What nucleophile will be here? So OH. So you will add OH. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Okay. So I'm really pleasing. Cl plus if you have Kc. Draw the molecule as it is, apart from the halogen atom. And what should I attach instead of halogen?
Cl. Cl. Instead of halogen, you write Cl. Sir, do they ask direct questions like these in board? Yeah. They do. There are solutions. ठीक है, ये कर लेंगे आप लोग. Now should I give you questions? Yes, sir. Yes, Rishta. Yes, sir. Third, fourth, do the complete reaction. They will rather they can ask what happens when bromide reacts aqueous. Then you have to show the complete reaction. Okay. Sir, should we send it? Sorry to me. Draw them. लेकिन please तुक्का मत मारिएगा. You have all the like what is the nucleophile in H2O, है ना? What is the nucleophile in HEC? You all know that. हमको गलत आंसर नहीं चाहिए. Once you remove the halogen, what should attach? You have this the complete list. Please look at that and then only write the answer. ठीक है?
Don't be in a hurry. आराम से. Like first of all, make sure that you are writing everything as it is, apart from the halogen atom. First, make sure about that, and then just add the nucleophile instead of halogen atom. Okay, Harsha. So, ठीक है. देखिए जो आपने KCN वाला लिखा है ना, हर्षा, मैं ऑडिबल? Yes, sir. अब उसमें बताइए जो बॉन्ड है वो कार्बन के साथ है या नाइट्रोजन के साथ है? Carbon. बट आई मीन इट्स नॉट क्लियर ना इन योर स्ट्रक्चर. Okay, sir. मेक सेंस? ठीक है, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा. मतलब आई अंडरस्टैंड दैट यू नो द आंसर, बट रिप्रेजेंटेशन मैटर्स ना. मतलब आपके पास क्या नॉलेज है उस पर तो टीचर मार्क्स नहीं देगा. ठीक है, सो स्कूल टीचर में कटेड. अदरवाइज हाँ, जैसे ONO का आपने बहुत सही किया, KNO2 वाला में बिल्कुल आपने सही से दिखाया है ना. दैट्स वेरी गुड. या ओके फाइन, एवरीथिंग इज करेक्ट. जस्ट अ सेकंड. Ishita, NO2, OHCN, वेरी गुड. नहीं, देखिए KNO2 में आपने गलती कर दी ऋषिता. KNO2 में देखिए गलती हो गई है. O and O, yes, sir. ONO, yes, and the bond will be with oxygen atom. Here you will have NO2. Instead of Br, will be having OH. Instead of I, will be having NC, and instead of chlorine, we'll be having ON. By the way, ऋषिता, आपका फिजिक्स कैसा चल रहा है स्कूल में? Sir, tomorrow is the first day of school. अच्छा, tomorrow first day of this. And we started with current electricity. You had Abhi some. wo- आपने स्टार्ट तो किया था ना, फिर आपको छुट्टी हो गई थी, राइट? Yes, sir. So it was from March 7th to March 22nd, and then we had a spring break. So now we covered like 2 topics. One of them was drift velocity. That's the only major topic we covered so far. समझ में आ रहा फिजिक्स आपको भी? या वैसे 10 जैसा है? Sir, abhi tak it's fine. Hopefully, I'll It's understand fine. better. Yeah. हाँ, क्या बोलते हैं, देखिए मेन फोकस आप फॉर्मूलाज में रखिएगा फिर, है ना? बिकॉज आई होप यू हैव सीन दैट या तो डेरिवेशंस, और नहीं तो फिर वो क्वेश्चन आंसर्स में, मतलब जितना कंसेप्ट 11th में लगता है उतना ज्यादा कंसेप्ट 12th में नहीं लगता है. आई मीन यू हैव बेसिकली हैविंग फॉर्मूला फॉर एवरीथिंग. ठीक है, जितना जहां तक Yes. हमें याद है. अदरवाइज योर फिजिक्स टीचर विल, हु इज टीचिंग फिजिक्स? आमना मैम? Yes, sir. देन यू आर गुड. So right here, now we have two major things. The reaction with KCN and AgCN, it is giving some different products, and KNO2 and AgNO2, it seems like they should give similar products, but they are giving different products. So we will have to understand this part. And this is one of the most favorite questions that has been asked in various years. Okay, board exam mein. The reaction with KCN and AgCN, and the reaction of KNO2 versus AgNO2. The reason for both of these products are same, okay, but we will look at both of them individually. To write the topic, reaction with KCN and AgC. Here we will look at case 1. Please write these things with me. Case 1. Reaction with KCN और KCN आपके बुक में है NaCN और CSCN. All of these will be giving you the same product. बस लेकिन KCN आपके किताब में है, but you can see that KCN, potassium, sodium, and cesium, all of these are in the what? Same group. ठीक है. So
What happens here? Please write. When alkyl halide is treated with ACN, then they form alkyl cyanide. It is also known as alkyl nitrides. ठीक है, रिएक्शन क्या है आपके पास? RX any haloalkene reaction with KCN. KCN से हम बता रहे because in your NCERT it is KCN, gives you RCN. ठीक है, plus obviously KX हो जाएगा. I write the complete reaction KX. Then you have mechanism. Mechanism सबसे पहले क्या होगा? Now you can stop writing. You will understand the mechanism, then you will write. Okay. Are you done till here? The reaction part. Yes, sir. In mechanism, what happens? First of all, you have casein. Ionic in nature, ionic hoga. Why ionic, sir? Because potassium is what it is, a group 1 element. Group 1 is the most metallic elements. Group 1 has most metallic elements, right? The most metallic character. So what will happen? It will dissociate into K positive and C negative. It is ionic in nature. C negative. Now, next step, what will happen? You have Rx. Since halogen atom is more electronegative, it will pull the electron density towards itself, making the alkyl group of the carbon atom delta positive. If I look at the Cn negative, the Cn negative, it looks something like this: carbon with a triple bond with nitrogen, and this nitrogen, it has a lone pair. This carbon, it is also having a lone pair, but it is having a negative charge. Now we have two electron rich sites. We have carbon that is also electronic because it has a lone pair. Nitrogen is also electron rich because it is having a lone pair. Now there are two things that can happen. Either the carbon can attack, either the carbon would attack here, or what could happen, or the nitrogen could attack here. Two things can happen. Now think about it. If carbon attacks, we will get carbon-carbon bond. If nitrogen attacks, we will get carbon and nitrogen bond. So obviously, carbon-carbon bond is very strong. उसकी catenation property की वजह से तो carbon is able to make so many compounds. Because the carbon-carbon bond is very strong, that is why carbon-carbon bond is formed, and this particular bond is not formed. ये वाला attack नहीं होता. Nitrogen does not. Even though both has the capacity to attack, carbon and nitrogen. But what attacks? Carbon attacks, and that is why we are going to get R that has C. Plus you will get X negative. This X negative then can add with K positive. Okay. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes or no? Sir, can you explain it again? Yeah, the only difference is that carbon attacks because carbon-carbon bond is more strong. That's the main thing. I don't know which part you did not understand. Okay. Yes. Tell me, what part you did not get? I didn't understand my carbon attacks, but now I think I got it clear. Do you got it clear? No. Okay. So, for example, if you have something like this, and what would happen? You get Cn. A very important point that you have to note down here, but not right now. Tell me how many reactant in the reactant molecule, that is bromoethane, how many carbon atoms are there? 2. And in the product? In the product? 3. 3, है ना? तो यहाँ पे this is very important. Conversions एक part है जो कि आता है organic chemistry में. So
from here to here, how will you go from here to here? In this case, whenever you have to increase the carbon number by 1, like ethane to propane, इस तरह से आपको जाना है, then you can use this particular reaction. ठीक है? So reaction with KCN, don't write now. Reaction with KCN is used to increase number of carbon atoms by increase 1 carbon atom. ठीक है? I'm also giving example. अभी बस ध्यान से सुनिए सकते हैं ना? Don't write. We'll give you time to write. For example, if they ask you, you have to go from ethanol to propane nitrate. ठीक है? Ethanol to propane nitrate. So ethanol क्या होता है? 2 carbon atoms and then this will have OH. From here to you have to go what? Propane nitrate. कुछ बच्चे जानते हैं, उनको लगता है बस इतना कर देना है, हो गया. Ethanol और propane nitrate में बस एरो डाल दो, नहीं. You have to show each and every step. ठीक है? So one, as you can see here you have 2 carbon, here you have 3 carbon. तो जैसे ही आपको एक कार्बन आटम बढ़ता लगे ना, 1 carbon atom is increasing. Think about this reaction of propane of KCN. But KCN reaction can only happen if you have haloalkane. तो पहले इसको क्या करेंगे? Haloalkane में convert करेंगे. And we have seen the method of preparation from haloalkane. What is the best method of preparation? Alcohol से best method क्या है? What reagent? What reagent should I add to get a haloalkane from alcohol? The preferred method of preparation from alcohol. SO3H. SOCl2. हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है ना? याद. Again revise कीजिए, यानी कि revise कीजिए. ठीक है? We will get Cl, and from here to here what we will use? We will use KCl. ठीक है? You can write it like this, or you can write in the first step I will add SOCl2. The second step I will add KCl. Does this make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? So yes, you can write. मैकेनिज्म से लिखना ना आप लोग को जी. Raise your hand, student. Waiting for Rishita.
थोड़ा सा इसको समझ तो लिया है आपने? ठीक है जरा, since KCN is ionic in nature, I hope you can write this now with me, है ना? साथ साथ लिखिए, since KCN is ionic in nature, ionic in nature, it dissociates into K positive and Cn negative, K positive and Cn negative ions, and Cn negative attacks on alkyl halide to form RCN, that is alkyl nitride. ठीक है, अब एक सवाल आपके पास ये आएगा, why KCN gives alkyl nitride but AgCN gives isonitride? ठीक है, so in that case we are going to write KCN ionic होता है वाला, ठीक है, एक तो ये आंसर। दूसरा होगा आपके पास सवाल आएगा, उसके लिए अलग आंसर होगा। They will ask you, in Cn negative both carbon and nitrogen is electron rich, why does the attack happens through carbon? ठीक है, अगर if they ask you this, then you cannot write KCN is ionic, then you will have to write what is Cn negative acts as nucleophile in which both carbon and nitrogen atom are electron rich. ठीक है, electron rich. That means both have a tendency to what? Tendency to form a bond, है ना, and can attack on the alkyl group. But attack होना किससे? Attack होगा, attack is going to happen from what? The carbon atom. So, right, but carbon atom attacks the alkyl halide form RCN as CC bond is stronger than कार्बन नाइट्रोजन। ठीक है, understood where to write what answer, Rishita and Harsha? Yes, sir. ठीक है, Sir, can you explain again how AgCN is different from this KCN? AgCN अभी आ रहा है ना, अभी AgCN अभी नहीं, ठीक है, क्या शायद अभी AgCN नहीं, सब तो लिखा देते हैं आप लोगों को। देखिए हम जब समझा रहे होंगे तो आप लोगों को लगा होगा कि बस समझा के छोड़ देंगे सर, है ना? जैसे नो ऋषिता हर्ष, व्हेनेवर सेइंग कि कार्बन से अटैक होगा, क्यों होगा? क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रांग होता है ना? तो आप लोगों को लग रहा था ना कि बस सर अभी बता दिए हो गया था, राइट ऋषिता? Uh, है ना? yes, yes, sir. काइंड ऑफ, है ना? लिखना सब लिखा था, ठीक है, डोंट डू एवरीथिंग लाइक द नोट्स विल बी लाइक दैट कि इफ यू आर रीडिंग द नोट्स ना, तो ऐसा लगेगा कि आप क्लास ही अटेंड कर रहे हैं। इतना इतना टेक्स्ट कौन ही लिखाता है? बस इसी वजह से नहीं नहीं, दिस हाल के हाल इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम फ्रॉम मी, ठीक है? इतना बड़ा ये चैप्टर तो है, ठीक है, चैप्टर बड़ा है, बट मेनी थिंग्स आर गोइंग टू बी कमिंग एट दिस इन दिस चैप्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। जैसे कि हम लोगों ने देखा मार्कोनिकॉव एंटी मार्कोनिकॉव रूल, भले वो 11th में था, बट अगेन वी हैव टू राइट ईच एंड एवरी पॉइंट, राइट? पेरोक्साइड इफेक्ट, Tarrasch इफेक्ट, सब कुछ। Similarly, you will see in this case
Setzeff rule that has also been studied in the last year, 11th standard, alkene ke reactions or the formation of alkene. But we will have to do that once again. Similarly, this chapter will be lengthier. Alcohol, phenols, ethers, even though it is a longer chapter, but that will take shorter time because the concepts are going to be revised once again. Whatever reactions we have seen from alcohols in this case, method of preparation of haloalkane, haloarene, we have seen the reactions of the preparation of haloalkane from alcohol. All of the same reaction will be there in the chemical properties of alcohol, so we don't have to repeat it. Okay, so even the content is going to be longer, but will take short time because बहुत सारी चीजें आपको ना आ जाएंगी जैसे इस चैप्टर. For example, you will be more comfortable in drawing the structures. Like right now, you will have to see एक bond. आप जो मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर होता होगा ना उसको आप ऐसे बनाते होंगे. ये 4 कार्बन का हमने मान लीजिए ऐसे बना दिया है. आप बनाते होंगे एक, फिर देखते होंगे बोर्ड पे मतलब स्क्रीन पे, फिर 2, फिर उसके बाद 3, फिर इस तरह बनाते हैं. बट इन अल्कोहल, फेनॉल, ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स आपको भी आदत हो जाएगी इस तरह बनाने. ठीक है, सो इट विल टेक अ वेरी लेस, इट विल टेक वेरी लेस टाइम. द सब्सिक्वेंट चैप्टर्स. Wrote both of these points, is or no, Rishita and Harsha? Sir, जी. doesn't polarity make the bond stronger? Polarity makes the bond stronger. Or देखिए, like the bond strength? bond strength. नहीं, polarity does not make the bond strength. It does not make it strong. ध्यान सुनिए. जैसे मान लीजिए आपके पास A और B. ठीक है, A पे ऑलरेडी डेल्टा पॉजिटिव है, B पे ऑलरेडी डेल्टा नेगेटिव. ठीक है, इसको A पॉजिटिव और B नेगेटिव में ले जाना आसान होगा, या फिर उस केस में जब A और B में कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, लाइक इसमें तो ऑलरेडी डेल्टा थोड़ा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ चुका है, सो इट इज इजियर टू ब्रेक दिस. क्या ख्याल है? राइट, Sure. सॉरी, It will be easy to break a neutral atom. नहीं आपकी आवाज में साफ नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए. So it will be easy to break a neutral atom. नो इट विल बी इजी. अब बताइए, जैसे अब हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं, जैसे पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव. पार्शियल नेगेटिव चार्ज तभी होगा ना व्हेन इट विल हैव अ लार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड with the B molecule. B molecule पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा. A1 molecule will not be having much electron. ठीक है, तो what we are doing in A positive and B negative, we are breaking this, right? ये सुनो, इसको हम ब्रेक कर रहे हैं. मेक सेंस? ठीक है, आप जो जहां पे आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी ना, वो हो रही है आपको आयनिक बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से ही अट्रैक्शन होता है. बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड ना हर्षा. ठीक है, आयनिक बॉन्ड में एज सच देयर इज नो ओवरलैपिंग नहीं होता है. पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर, दे आर डिसोसिएटेड ओनली, बट दे आर अट्रैक्टेड थ्रू दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. देयर इज नो इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन देम, बस वो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्ट. दैट इज व्हाई आप देखिएगा कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव अगर चार्जेस होगा तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा. बट दिस इज ओनली इन द केस ऑफ आयनिक. व्हेन वी टॉक अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड्स, देन इन दैट केस पोलैरिटी होगी तो बॉन्ड विल बी वीकर. एंड दूसरी चीज, you will always have a strong covalent bond if you have having homonuclear atom. The carbon carbon hydrogen hydrogen इन सब का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा. ठीक है, आई थिंक पोलैरिटी आप उससे आप ये कंफ्यूज हो जा रहा है आयनिक बॉन्ड्स. इसमें चार्ज ज्यादा होता है तो लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है. इट इज आई मीन नॉट टफर टू ब्रेक बट रादर डिसॉल्व उसको करना थोड़ा ये होता है. ठीक है, खैर, बट यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ना रिगार्डिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, है ना, कि ए और बी में अगर बी के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो बस अब थोड़ी सी एनर्जी दीजिए आप इसको, बी पूरा इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा. मेक सेंस हर्षा? ठीक, अब देखते हैं केस को. रिएक्शन with AgC. In this case, what happens? AgCN, Ag is, it is a metal, but it is not as good metal as potassium. That is why the bond in AgCN, it is what it is, more dominantly covalent character. It has more covalent character than the ionic character as in the case of potassium. The AgCN it is covalent character. Now, if it is having covalent character, then the reaction will take place something like this. Plus, you have AgCN. Ag
will have a bond with carbon, then there will be a triple bond with nitrogen. ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के पास ही सिर्फ लोन पेयर है, कार्बन के पास तो लोन पेयर है ही नहीं, तो द अटैक इज ओनली पॉसिबल वाया नाइट्रोजन atom. Does this make sense? Yes or no, please? Yes, sir. We will get RNC. I mean, triple bond को छोड़ दीजिए, ठीक, RNC plus AgX. अब ये डायरेक्ट यहाँ पे अटैक करेगा ना, तो यू विल हैव फर्स्ट ऑफ ऑल R और nitrogen, then you will have triple bond carbon, then you will have Ag, then you will have X negative here. Now obviously this Ag will be having some, it is what it will be having delta positive, so it will come here, it will attack here, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से ये बॉन्ड इसको दे देगा, ठीक. Now the carbon atom will be having 3 bonds and 1 lone pair, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा. यहाँ पे न्यूट्रल तो नहीं, मतलब इसके पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. So even though पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं द सेम कंपाउंड, बट इट इज गोइंग टू बी न्यूट्रल बिकॉज नेट न्यूट्रल कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है. So if you are thinking कि सर n अटैक किया तो पूरा का पूरा NCAG होना चाहिए, but that will not happen because X negative will attack on the Ag positive, ठीक. अब यहाँ हम इसको लिख लेते हैं, right here AgCN has more covalent character due to which does not dissociate into ions. In AgCN, the carbon atom is covalently bonded to Ag. Therefore, only nitrogen atom bears a lone pair and tendency to and attacks on Rx, forming RNC. Done writing is only. Yes, sir. Basic आपको आंसर क्या दिखना है? If they are going to ask like why it happens, like why haloalkane gives KCN and why haloalkane reacts with KCN to give alkyl cyanides and AgCN में you will get isocyanates. तो मेन आपका आंसर क्या लिखना है? मेन आपके पास दिमाग में क्या रहना चाहिए? KCN
आयोनिक, और AgCN कोवैलेंट। ठीक है, बस यही मेन डिफरेंस है, इसको आपको याद रखना। चलिए मूविंग ऑन। राइट, मींस रिएक्शन विथ AgNO2 and KN, AgNO2 and KNO2. Case one, KNO2। KNO2 में क्या होगा? KNO2 is going to be again वही ionic होगा, that is why you will get K positive plus NO2 negative। NO2 negative का स्ट्रक्चर ऑक्सीजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, A डबल बॉन्ड B सिंगल बॉन्ड C, और C पे क्या आपके पास नेगेटिव चार्ज है ना। So what is going to happen in this case is this oxygen atom is also having negative charge, और because of resonance what would happen, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे और ये पॉई बॉन्ड यहाँ पे, so this oxygen is also having negative charge। ठीक है, रेजोनेंस की वजह से, दैट मींस बोथ द टर्मिनल ऑक्सीजन आर गोइंग टू हैव नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास अब अटैक दोनों ऑक्सीजन से हो सकता है और एक नाइट्रोजन से, दैट इज बाई ओनली बिकॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सोचिए ना, ऑक्सीजन एटम कितने? दो। नाइट्रोजन एटम कितना? एक। ऑल ऑफ दीज आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन रिच। This oxygen atom is going to have 3 lone pairs. This nitrogen atom is going to have 1 lone pair. This is going to have 3 lone pairs. Now, only because of the probability that oxygen atom ज़्यादा है, that is why what would happen, the attack will be from the oxygen atom, and it will give you majority of the products which are what, which is alkyl nitrite। Attack किस तरह से होगा? You will have oxygen double bond nitrogen single bond O negative plus Rx. This oxygen atom will attack you like this. You get R O bonded with nitrogen double bond, plus you will get Kx। ठीक है, reason वही है, that why, because it is going to what have KNO2 is what it is going to be ionic, and it is going to give you nitrite ion, जिसमें आपके पास ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज। मेक सेंस? इसमें प्लीज टेल मी। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे KNO2 is ionic and dissociates into K plus and NO2 negative, in which NO2 negative has negative charge on oxygen atom, therefore alkyl light is attacked by oxygen atom, forming alkyl nitrite। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे ज्यादा, दैट इज मोर अनस्टेबल, और ऑक्सीजन एटम ज्यादा भी है, यू हैव टू ऑक्सीजन एटम्स, दैट इज व्हाई द ओवरऑल अटैक इज बाय व्हाट, ऑक्सीजन एटम। लेट मी नो वंस यू डन राइटिंग।
Then yes or no, please tell me. Done, sir. Just waiting for Harsha now. Done. Case 2 है आपके पास. Reaction with AG. तो अब AgNO2 के साथ दिक्कत क्या है? AgNO2 is going to be covalent. यहाँ पे बॉन्ड इस तरह से होगा. Ag bond with oxygen. Oxygen will have a single bond with nitrogen. Nitrogen will have a double bond with oxygen. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, और नाइट्रोजन एटम के पास भी लोन पेयर. दैट मींस both the oxygen atom and nitrogen atom can attack. In the previous case, negative charge was on oxygen atom, so oxygen atom was more feasible, or it was more responsible for the attack on the alkyl group because उसके पास negative charge. In this case, all of the atoms are neutral. यहाँ पे we have to look at the electronegativity. Which of the atom, oxygen atom or nitrogen atom, which of them is going to give electron density or give electrons more easily? Obviously, oxygen is more electronegative. If it is more electronegative, it will not want to give the electron density easily. Nitrogen is less electronegative. That is why it can give the electrons easily in comparison to oxygen. That is why when you have this, when you have AgNO2 and you react this with Rx, the attack will happen via nitrogen atom and you will get RNO2. NO2 में से होता है. ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज आता है, ओवरऑल नेट न्यूट्रल हो जाता है. बस यू विल गेट Ag. ठीक है, so what will write here as AgNO2 is covalent the oxygen atom does not bear negative charge, and nitrogen is less electronegative than oxygen. Therefore, nitrogen attacks on alkyl line forming nitrogen. ठीक है, yes or no, tell me. Yes, sir. अब इसके बाद सी जैसे अगर आप KCl में भी देखें, then कार्बन नाइट्रोजन एटम दो, in the case of NO2 नेगेटिव, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दोनों के पास टेंडेंसी है. AgNO2 में भी जो आपके पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, दोनों के पास टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, बट ओनली वन ऑफ देम डोनेट्स. सो दीज न्यूक्लियोफाइल्स जहां पे एक से ज्यादा डोनर साइट्स होते हैं, डोनर साइट्स में समझ, एक से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, उनको एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट, ये डेफिनेशन है, याद रखिएगा. एम्बिडेंट, एम्बी
Dent nucleophile. What are ambident nucleophile? Please write. The nucleophile which have more than one donor sites for attacking and bond formation that is known as ambident nucleophile. Examples we have then you have CN negative, you will have NO2 negative, you will have AgNO2. All of these are examples. एक काम कीजिएगा डोनर साइड, एक सेकंड, डोनर साइड में अगर आपके पास थोड़ा जगह बचा है तो इसमें एक और लाइन लिख लीजिएगा, डोनर साइड्स और न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स। न्यूक्लियोफिलिक हो गया यहाँ तक रिश्ता हर्षा? Yes, sir. Yes. सवाल करते हैं आप लोग को। This is regarding carbon. It's important सवाल है. So the question is this. This question is actually in the chapter में भी इस सवाल किया जा सकता है, ठीक है? When 3-methyl butane 2O is treated with a PR, then the following. Basically, ये method of preparation of haloalkane है. It can also be in the SN1 type of question also, ठीक है? Because जहाँ carbohydrate formation. So basically is completely different. क्यों हो रहा है उसको देखने के लिए. Sir, your voice First of is all, I will breaking. make this compound. We have 1, 2, 3, breaking a law. So Rishita,
Is it better now? Yes, sir. Okay. Yes, So what sir. I was saying, when we react, no, it is not clear. Ishita? I said yes, sir. Achha. Okay. So here, if you see, we have OH. Generally, what do? We replace the OH with the Br, but we have having a compound that is completely different. So let us see what is happening here. Right? So in the first case, we have to see the reactant. Reactant where we have 1, 2, 3, 4 carbon atoms. I will write it here. 3 and 4 carbon atoms. The second carbon atom is having a CH3 group. That is fine, CH3. And here we are having a OH. OH is also fine. So what would happen in the first step is PC. OH is having a lone pair, it is having 2 lone pairs. And then we have the HBr. Obviously, Br will be pulling electron density from hydrogen because it is more electronegative. PC, don't write, leave your pen aside. Okay, Rashid and Hashab, don't write. Delta negative and delta positive. So oxygen atom is first of all going to attack on the hydrogen atom like this. And you will get CH3, oxygen with 2 hydrogens. Oxygen will get a positive charge because उसने एक electron pair donate किया. As soon as you form this oxygen with 2 hydrogen, now it is going to easily take up this electron and form a water molecule. आपके पास क्या होगा यहाँ से ऐसे करके water निकाल H2. Now we are left with what? Br negative यहाँ. Br negative बचा हुआ है. Now if you see here, we have CH3. This is a carbon carbocation, carbon positive. यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन. ठीक है, yes or no, please tell me. Here you will have one hydrogen now because it is having 3 bonds. So एक हाइड्रोजन होगा. क्या ख्याल है? Make sense till here? ठीक है, अब ध्यान सुनिए. Here in the hydrogen atom, you'll be having some electron density. इसको हम ऐसे अगर हम यहाँ पे लो बना दे, एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला ऐसे करके लो होगा, तो यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन होगा एंड हियर विल बी हैविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी. इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव, बगल में ही पॉजिटिव चार्ज, बगल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज. ऐसा हम बोल सकते हैं कि एक सेकंड के लिए, like this hydrogen atom, it is having negative charges, like, and it is having what? Electron density. एक सेकंड के लिए ये यहाँ आ जाए, like for a fraction of second. And this happens also अगर आपको हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा याद हो. हाइपर कॉन्जुगेशन में ऐसे ही कुछ होता है. For a fraction of second, the electron density moves this side. You have CH3 here, the hydrogen atom will come here, and if the hydrogen atom is coming here, you will get a positive charge here. Can we say that this can happen for a single second? मतलब एक 1 millionth of a second, थोड़े से टाइम के लिए ऐसा हो सकता हो, एक नैनो सेकंड के लिए. क्या ख्याल है? Is it possible? मतलब आपको कैसा लगता है? बिल्कुल इम्पॉसिबल है या फिर ऐसा हो सकता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है एंड देन यू हैव इलेक्ट्रॉन रिच, लाइक हाइड्रोजन एटम है वहां पे बिल्कुल नजदीक में. हाइड्रोजन एटम इज आल्सो व्हाट? वेरी स्मॉल. सो इट कैन शिफ्ट लाइक दिस फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड. क्या ख्याल है ऋषित एंड हर्ष? Yes, sir. हर्ष, व्हाट डू यू थिंक? Yes, sir. थिंक इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव. ठीक है ना? अब यहाँ पे देखिए, नाउ दिस इज व्हाट, लाइक दिस कैन हैपन फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, ओके, बट वापस ये नहीं जाए. जो वापस का हमने एरो डाल दिया था वापस, लेकिन ये नहीं जाएगा. व्हाई? उसका भी रीजन है. द रीजन इज, वापस जाएगा तो बहुत कम जाएगा. द रीजन इज दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डिग्री एंड नाउ दिस हैज बिकम 3 डिग्री. So this is more stable. Make sense? Yes or no, please tell me. Yes, sir. क्या ख्याल है ना? And this we say it is what? Hydride shift. 1,2, that means hydride shift कहाँ से कहाँ हो रहा है? कार्बोकेटाइन है 1, 2, 1,2 hydride shift. ठीक है. अब इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक इंटरकन्वर्शन होता है, इंटरमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है, that is known as hydride shift, जिसमें आपके पास CH3 is here and यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन आ जाएगा and this carbon atom will get a positive charge. After this, we'll have the Br negative. The Br negative is going to attack on this carbon atom because we are having carbon there, and we will get
CH3 and PR गया. That was the product that we got in the reaction also. ठीक है, इसको जरा लिख लीजिए. So it happens only for OH. No, not for OH. मतलब अगर कार्बोकेटाइन बनेगा ना, then you always will have a chance for hydride shift. Sometimes we'll have chance for methyl shift. Sometimes we'll have chance for ring expansion, ring contraction. वो सब बहुत सारी चीजें होती हैं. आपके सिलेबस में बस ये हाइड्राइड शिफ्ट दिया हुआ है, इवन दो अगले चैप्टर में है. और they have also given a hint. I mean, they have not discussed this in मतलब पूरे एनसीईआरटी में कहीं डिस्कस किया हुआ नहीं है उन्होंने, बट दे हैव गिवन दिस क्वेश्चन. और क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ. क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, एंड आफ्टर दैट दे हैव आल्सो गिवन द हिंट इस तरह से. ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट इज necessary to teach this. Secondary carbocation form in step 2 rearranges to form a more stable tertiary carbocation by a hydride shift to form third from third carbon. ये तीसरे कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, ये जैसे पहले तो मीन्स में इस तरह के सवाल पूछे जाते थे कार्बोकेटाइन से रिलेटेड, एक्सपेंशन और हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, सारी चीजें पूछी जाती थी. लेकिन जनरली दिस इज नॉट आस्क्ड these days. उतना नहीं पूछा जाता है. ठीक, एक दो एग्जांपल्स हम आपको और दिखा देते हैं. कार्बोकेटाइन के रीअरेंजमेंट्स बोलते हैं इसको, रीअरेंजमेंट्स ऑफ कार्बोकेटाइन. So how did oxygen get the positive charge in the second step? ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया ना हाइड्रोजन को, दैट इज अ पॉजिटिव चार्ज. ऑक्सीजन ऐसे अटैक कर रहा है ना हाइड्रोजन के ऊपर. दो तीन ना, देयर आर सम लाइक इसको ना जैसे मैथमेटिक्स में ना देयर आर सम फैक्ट्स जिसको आपको याद करना पड़ेगा, जिसको टेबल्स बोलते हैं ना बहुत सारे कंट्रीज में ना. सम मैथमेटिकल फैक्ट्स दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट 2 into 2 4 होगा. इसलिए आप इसको समझा सकते हैं, लेकिन याद कर लेना ज्यादा बेहतर है. उसी तरह से ना कुछ चीजें केमिस्ट्री में अगर आप याद कर लेंगे ना, देन इट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल, वेरी मच हेल्पफुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खासतौर से. जैसे सबसे पहले तो ऑक्सीजन के पास अगर दो बॉन्ड है, देन न्यूट्रल. डबल बॉन्ड नहीं कहा हमने, दो बॉन्ड का, दो सिंगल बॉन्ड हो चाहे एक डबल बॉन्ड हो तो ये न्यूट्रल हो. ऑक्सीजन के पास अगर तीन बॉन्ड है तब इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा. भाई ऑक्सीजन के पास अगर एक बॉन्ड होगा देन इट विल बी व्हाट, इट विल बी नेगेटिव चार्ज. ठीक है, ऑक्सीजन के केस में ये याद रखिएगा. नाइट्रोजन के केस में, नाइट्रोजन के केस में इफ इट इज हैविंग 3 बॉन्ड्स तब ये न्यूट्रल. नाइट्रोजन के केस में अगर इसके पास 4 बॉन्ड हो जाए तब ये हो जाता है पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, वही नाइट्रोजन के केस में अगर इसके पास 2 बॉन्ड हो जाए तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर एक बॉन्ड ही रहा तो इसके पास 2 नेगेटिव. बट हम जब एक बॉन्ड बोल रहे हैं तो ऐसा मत समझ लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल RNH2. अब मत बोलिएगा सर एक ही बॉन्ड है सर यहाँ पे तो, है ना. तो ध्यान दे दीजिएगा कि दो हाइड्रोजन भी है तो दो हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड होगा. 3 बॉन्ड है, दैट इज व्हाई इट इज न्यूट्रल. बट वही अगर आपके पास मान लीजिए RN रहेगा तो इस पर 2 नेगेटिव रहेगा. RNH रहेगा तो NH के बाद नाइट्रोजन पे अभी सिर्फ 2 ही बॉन्ड है तो एक यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज. मेक सेंस? मेक सेंस? यस और नो, टेल मी. लेट मी नो once you're done writing.
दिख रहा है क्या अभी भी? मैं लिखिए आपको। Writing. Sutesh done. Waiting for Harsha. ओके सही है। देखिए एक दो रिएक्शन और ना हम लिखा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल्दो दीज आर नॉट वेरी मच रिक्वायर्ड, बस आप लिख लीजिएगा। तो यू हैव सीन हाइड्राइड शिफ्ट, एक और हाइड्राइड शिफ्ट आपको दिखा देते हैं। मीन सेम रिएक्शन होगा बट थोड़ा सा चेंज। इंस्टेड ऑफ OH विल हैव Br, फॉर एग्जांपल यू हैव 1 2 3 4, यहाँ पे आपके पास है CH3, यहाँ पे आपके पास है Br, ठीक है। Let us suppose we are doing this reaction in water H2O, that is polar protic solvent, और उसके साथ आपने यहाँ पे NaOH दे दिया, aqueous पानी तो है ही, NaOH है ना। तो ऑब्वियसली ये दिस इज गोइंग टू गिव यू 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन थोड़ा सा स्टेबल तो होगा ही, ऑल्सो वाटर है तो वाटर इट इज गोइंग टू स्टेबलाइज, है ना। सॉल्वेंट का जो इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे अब क्या होगा, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल हैव CH3 एंड आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है, Br निकल जाएगा तो फाइन। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज गोइंग टू शिफ्ट लाइक दिस, CH3 पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम, राइट। एंड उसके बाद आपके पास OH negative from aqueous NaOH, it is going to attack into this carbon atom, forming an alcohol which will look something like this, ठीक है। एक तो ये रिएक्शन, उसके बाद मान लीजिए आपके पास 2 CH3 लगा हुआ, आयोडीन ले लेते हैं इस बार, ये है H2O, और भाई आपके पास KOH है ना। तो कुछ और ले ले क्या, CN ले ले, ये CN ले लेते हैं, चलिए। H2O हो चाहे फिर इथेनॉल वगैरह कुछ इस तरह के भी रिएजेंट हो तभी चलेगा। तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, विल हैव CH3 CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। नाउ इन दिस केस, इस केस में तो देखिए दिस इज अ वेरी बल्की ग्रुप, अगर बल्की ग्रुप है तो फिर SN2 तो हो नहीं पाएगा, बिकॉज बैकसाइड अटैक पॉसिबल नहीं होगा इस केस में। अब यहाँ पे क्या होगा, यू विल हैव अ मिथाइल शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा। 1 2 3 CH3 यहाँ पे, और एक CH3 यहाँ पे लग जाएगा, देन पॉजिटिव चार्ज इज हियर, देन द CN नेगेटिव विल कम, CN negative is going to attack here,
गिविंग यू द फॉर्मेशन ऑफ CH3. दिस CH3 इज हियर एज इट इज, और एक यहाँ पे आपके पास आ जाएगा CN. ठीक है. अब एक और चीज होता है, वो भी देख लीजिए. फॉर एग्जाम्पल इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन. ठीक है. ऑब्वियसली यू कैन सी दिस इज अगेन अ वेरी लार्ज ग्रुप. यहाँ पे भी इट इज गोइंग टू हैव पाई डाल देते हैं, कार्बोकेटाइन और स्टेबलाइज हो जाएगा. एंड लेट अस सपोज यू हैव KOH. ठीक. पहले स्टेप में तो द BR विल लीव. BR जब हटेगा, यू विल हैव अ पॉजिटिव चार्ज लाइक दिस, CH2 पॉजिटिव. ठीक है, CH2 पॉजिटिव. अब देखिए दो चीजें, एक तो यहाँ पे आपके पास ये रिंग है, दिस रिंग इज व्हाट 4 कार्बन एटम. 4 कार्बन एटम से यानी कि 90 डिग्री, है ना. थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होकर 90 डिग्री से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, बट एक्चुअल बॉन्ड एंगल, ध्यान सुनिएगा, द एक्चुअल बॉन्ड एंगल शुड बी 109.5 डिग्रीज. इसी को बोलते हैं रिंग स्ट्रेन. जब रिंग बनता है एंड द एंगल और इन द रिंग बिकॉज ऑफ द साइक्लिक नेचर, जो एंगल है वो छोटा हो जाता है. एंगल बड़ा होना चाहिए था. टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल में 109.5 होना चाहिए था, बट इट इज नाउ 90 डिग्री अप्रोक्सीमेटली. So now there will be some instability because of that 90 डिग्री की वजह से. So what happens here is what we say is ring expansion. ring expansion में क्या होगा, this bond, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, बॉन्ड को आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इधर से यहाँ आ जाए. ठीक है. तो जब भी आप रिंग एक्सपेंशन, ये सब चीज आपके पास बोर्ड्स में नहीं आता, हम बता दे रहे, लेकिन फिर भी अगर कहीं आ जाए तो. अब ध्यान से देखिए, इसमें जब भी आप रिंग एक्सपेंशन करेंगे नंबर दे दीजिएगा. CH2 पॉजिटिव का आपने एक नंबर दिया, फिर इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5. ठीक है. नाउ फिफ्थ कार्बन एटम फर्स्ट कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि फिफ्थ और सेकंड का बॉन्ड है. अब बॉन्ड मूव कर रहा है 1 के पास, यानी कि यू विल हैव अ न्यू रिंग विच इज ऑफ 5 कार्बन एटम्स. 5 कार्बन एटम डाल दिया आपने इस तरह से. ठीक है. अब उसके बाद आप नंबर दे दीजिए 1 2 3 4 5, कैसे भी नंबर दे दीजिए. फर्स्ट कार्बन एटम पे क्या था, CH2 पॉजिटिव, उसको एक बॉन्ड मिल गया, तब ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, है ना. पॉजिटिव चार्ज था, इसको एक बॉन्ड मिल गया तो न्यूट्रल हो गया. सेकंड कार्बन एटम जो था, इसके पास पहले कितने बॉन्ड थे, 1 2 3, अब कितने, सिर्फ 1 और 2. सेकंड कार्बन एटम के बाद आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. यहाँ पे आपके पास OH नेगेटिव विल अटैक onto this carbon atom, giving you a completely different product OH. ठीक है. इन 3 केसेस को लिख लीजिए बस आप. ये वाला पहला किस किसका है, दिस इज फॉर हाइड्राइड शिफ्ट, दिस इज हाइड्राइड आयन शिफ्ट, दिस इज CH3 shift, methyl shift, and this is known as ring expansion. अब यहाँ पे जो स्टेबिलिटी आई है ना, यहाँ पे एक तो ये 1 डिग्री था, अब ये 2 डिग्री हो गया. एक तो ये स्टेबिलिटी आई है, दूसरा स्टेबिलिटी कहाँ से आया, दिस वाज हैविंग रिंग स्ट्रेन. अब 5 कार्बन एटम में अप्रोक्सीमेटली 109.5 डिग्रीज का एंगल होता है, एंड यू हैव पेंटागन में. सो दैट इज व्हाई एक तो आपका रिंग स्ट्रेन कम हुआ, एंड देन यू आर गोइंग टू हैव 2 डिग्री आंसर. लिख लीजिए बस, मतलब नोटबुक में होना चाहिए. ठीक है ना. बात समझ आ रही है ऋषिता, हर्षा? Yes, sir.